हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर मुज़म्मिल रहमान एंड यू आर वाचिंग माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड स्पेशली द ट्रेडिंग अकाउंट। सो प्लीज़ इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, क्योंकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। सो थैंक्स अ लॉट फॉर योर सपोर्ट एंड लव। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स, what does this mean? Actually, these are those accounts which are being prepared by corporates and other businesses at the end of the accounting period. यानी वो सभी अकाउंट्स जो हमने अकाउंटिंग पीरियड के इख्तिताम पर बनाने होते हैं। Once the accounting period gets to an end, and that depends upon your accounting period, कि आपका accounting period कितना है. It can be minimum of 3 months. तो 3 महीनों के बाद जो आप अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे ना, we call them final accounts. Somewhere you can have 6 months accounting period. Then we also can have a 1 year. Accounting period. तो सभी अकाउंट्स जो हम प्रिपेयर करते हैं आफ्टर 3 months, आफ्टर 6 months और आफ्टर a year, we call them what? We call them final accounts. वो सभी कॉर्पोरेट्स, वो सभी बिजनेस जो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, इट्स ऑब्लिगेटरी फॉर देम, नॉट फॉर ऑल. लेट्स टॉक अबाउट दैट इन द लेटर ऑन सेशन, कि कौन से कॉर्पोरेट्स, कौन से बिजनेस के लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑब्लिगेटरी रहते हैं बनाने के लिए, और कौन से ऐसे कॉर्पोरेट्स हैं जिन पर ये ऑप्शनल रहता है. For them, it's optional. It's not obligatory. They do have a choice. If they do it, well and great. If they don't, means you can't punish them and you can't penalize them under the eyes of law. So now, before learning these final accounts, we must have once again a look at the accounting period. फाइनल अकाउंट्स पढ़ने से पहले हमें अकाउंटिंग साइकिल बार बार रिपीटेटिवली पढ़ना पड़ता है, बिकॉज अकाउंटिंग इट्स अ सिस्टमैटिक प्रोसेस एंड यू हैव टू रिमेंबर एवरी स्टेप. तो सबसे पहले होता क्या है? सबसे पहले होता है ट्रांजैक्शंस. So the first thing that occurs is a transaction. From transaction we have source documents. From source documents we have vouchers, and from vouchers we prepare our journal, जिसे हम कहते हैं डे बुक. Then from journal we prepare LEDGER, ledger accounts. तो ledger accounts के बाद हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस से हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस, एंड देन फाइनली वी प्रिपेयर बैलेंस शीट. Great. So this is the total work which is being performed by an accountant during a particular time period. तो ये पूरा मेरा काम पड़ा हुआ है. First I have transactions, then the second step is to prepare source documents, then we have vouchers, then we have journal, then we have ledger accounts, then we have trial. It's again optional. अगर आपने ट्रायल बैलेंस अभी तक नहीं पढ़ी है, प्लीज जस्ट विजिट माय यूट्यूब चैनल एंड have a look. I have just gone for the micro analysis of this trial balance. What does it stand for? What are its components and tricks and tips as well? So then we have trading, then we have profit and loss, and finally we have the last one, that's balance sheet. तो ये वाले जो अकाउंट्स हैं ना, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट हो, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस हो या बैलेंस शीट हो, ये वो 3 स्टेटमेंट्स, 3 अकाउंट्स हैं जिन्हें हम अकाउंटिंग पीरियड के एंड में प्रिपेयर करते हैं. Great. And these are said to be what? These are said to be final accounts. तो फाइनल अकाउंट्स कौन कौन सा है आपके पास? We have trading, we have profit and loss, we have balance sheet.
And few authors, or even though few institutes, say that we have one more financial final account, that is your cash flow statement. वो भी फाइनल अकाउंट्स में ही आता है. So hope you got this. Okay, great. Now there are few important points that you must keep in mind before learning these final accounts. बहुत कुछ important bits हैं, कुछ important information है जो आपने याद रखनी होती है final accounts पढ़ने से पहले. Final accounts are also known as, the first thing you need to keep in mind is final accounts are also known as financial, financial, statements, financial statements, and it includes trading account, profit and loss account, balance sheet, and cash flow. Cash flow statement. Great. So these are our final accounts. Number first, you need to keep in mind final accounts are also known as financial statements, and it includes trading account, profit and loss, balance sheet and cash flow. तो अगर कोई आपसे कहेगा कि फाइनल अकाउंट्स में होता क्या क्या है, what are the various components, so you must keep in mind we have trading account, profit and loss, we have balance sheet, and we have cash flow, and one by one we'll learn them by heart by a deep analysis, by learning their fundamentals and rules and how these accounts are to be prepared. Great. Now the point number second that you need to keep in mind, these are prepared at the end of accounting period. तो दूसरी चीज जो हमने याद रखनी है ना, दैट इज कि ये चाहे ये अब 4 है या 3 स्टेटमेंट्स है आपके पास, चाहे आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट है, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस है, चाहे बैलेंस शीट है या कैश फ्लो है, these all are prepared at the end of the accounting period. यानी अगर आपका accounting period 1 साल है, then you gonna prepare them after at the end of the year. If your accounting period is 6 months, you gonna prepare them after 6 months. And if your accounting period is 3 months, that is quarterly results, you gonna prepare them after 3 months. यानी जितना आपका accounting period होगा ना, उसी के end पर हम इन accounts को prepare करते हैं. This is the second point that you must keep in mind. Number third is these accounts get input from trial. जो भी आप इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे, द इंफॉर्मेशन दैट यू विल एम्बेड, दैट यू विल राइट इन दीज, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस होगा, बैलेंस शीट होगा या कैश फ्लो होगा, तो इनकी जो इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, वेयर फ्रॉम यू गेट दैट? यू गेट दैट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस. सो इफ समबडी विल आस्क यू दैट वेयर फ्रॉम यू प्रिपेयर दीज अकाउंट्स, so you just keep it in mind, these all our accounts are being prepared from trial balance. तो जब भी आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे ना, तो इसका इनपुट कहाँ से आएगा? यू विल गेट दैट फ्रॉम द पूल ऑफ योर, दिस इज योर ट्रायल बैलेंस. This is trial balance. It contains information about trading, about profit and loss, about balance sheet, etc., etc. So it is the pool of information where you drag your information and put it into trading, into profit and loss, into balance sheet, etc., etc. So this is the third point that you must keep in mind. कि final accounts जब हम prepare करते हैं ना, so we get information from where? We get from the trial balance because it contains the balance of every account. Hope you got this. Then we have the next thing, a $1 billion question. यहाँ पर एक important question है.
So we have a $1 billion question that why these accounts are prepared. Why these accounts are prepared. So what's the basic funda, what's the basic reason, यानी कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी बिना पर हम इन अकाउंट्स को, चाहे वो ट्रेडिंग हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो या बैलेंस शीट हो, why do we prepare them? And we have two great reasons. Number first, to check the financial performance. To check the financial, this is the first reason. To check the financial performance. You know, business, it's like a baby. It's like a boy. It's like your son and daughter. तो होता क्या है, when once you admit your kids, your relatives into any school or college or university, after a fixed period you are impatient to learn his or her result. जब भी हम अपने बच्चों को, अपने रिलेटिव्स को किसी भी स्कूल में एडमिट करते हैं और 1 साल के बाद हम काफ़ी ज़्यादा इम्पेशेंट रहते हैं कि यार अब देखना है कि हमारे किड ने वहाँ पर क्या परफॉर्मेंस दी हुई है, व्हाट्स हिज पोजीशन, व्हाट्स हिज परफॉर्मेंस. So you are impatiently waiting. And similarly with the business, once I have started my business, not only me, if I am the owner, all of the stakeholders, चाहे वो आपके क्रेडिटर्स हो, चाहे आपके बैंकर्स हो, चाहे आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे आपके सप्लायर्स हो, गवर्नमेंट, टैक्स अथॉरिटीज, रिसर्च स्कॉलर्स, financial data service centers, etc., etc., they are impatiently waiting for your results. तो वो results हमें आपकी परफॉर्मेंस बता दे, what you have done in this period. Great. So the पहला रीजन जो है ना, that is to check the financial performance. इसी अकाउंट्स को बनाने के बाद, इन्हीं अकाउंट्स को बनाने के बाद हमें पता चलता है कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही है, whether we have attained something, whether we have earned profits or we have incurred losses, or we have only two options, or there can be somewhere option number 3, that's the break-even, means you neither have profits nor losses. So that's a rare a probability case, but majorly either we can have profit or we can have loss. या तो आपके पास profit आएगा या तो loss आएगा. So the first reason is to check your financial performance, कि आपकी performance कैसी रही है, जो आपने business operate किया हुआ है, क्या आपने profit कमाया. If you have earned the profit, so in the next period you try to multiply it. For example, अगर मैंने कोई corporate start किया, in this period I have earned a profit of rupees 1 lakh. So I'll try to multiply it in the next period. अगर इस पीरियड में, इन 3 महीनों में मैंने 1 लाख का प्रॉफिट कमाया हुआ है, तो I'll try to multiply it. यार अब मेरा प्रॉफिट 2 लाख होना चाहिए. So this helps you in setting the benchmark. Great. Setting the targets and the goals. Number second is that you want to check. Number second is to check the position of the business. Definitely you want to check the status of your business. आपकी पोजीशन है क्या इस टाइम. जैसे ही you might have seen this in the result, कि जब किसी भी क्लास का, चाहे वो 10th का रिजल्ट हो, चाहे वो 12th का रिजल्ट हो, या किसी प्रोफिशिएंसी का रिजल्ट हो, किसी कॉमन एंट्रेंस का रिजल्ट हो, या JEE, NEET, etc., you might have seen once you look at the mark sheet of your kids, you'll get two things. One is the performance. For example, किसी ने 500 में से 450 या 490 he or she has got. This is the performance. And second, that mark sheet, that result tells you the position of that kid. उसकी rank कितनी है. Similarly, these accounts which are prepared at the end of the accounting period will tell you two things. Number first, they will tell you the performance of the business, कि आपके business ने क्या पाया, क्या खोया. And the second, they'll tell you the position. और position के बारे में हम इंशाल्लाह in detail depth में पढ़ेंगे once we'll learn the balance sheet, because उसे हम कहते हैं position statement, which tells you the position of the business. So great. So the question was why we prepare them. If anybody will ask you that why these accounts, why these financial statements are prepared, so the answer is very simple. We prepare them for checking the performance of the business. And number second, we check the position of the business. So these are two reasons. Great. Hope you got this. Now, the third thing that you must keep in mind before learning these accounts. वो क्या है? That is
these accounts are majorly based on period and matching concepts. If you are not learned these concepts, please just go to my site, open the link and watch this video, gap generally accepted accounting principles, so you'll get all these principles. तो याद रखना है जो हम यहाँ पर अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, in the MCQ will be asked that why these accounts are prepared. These are based on period and matching concepts, matching principles, because it's the matching principle that estimates, that tells us that after this period, after a fixed period, you must match your cost with the revenue. तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है वो जो आपने याद रखी. दिस द फोर्थ थिंग दैट यू मस्ट कीप इन माइंड कि अगर कोई कहेगा आपके व्हाई दीज अकाउंट्स आर प्रिपेयर, वी नो फॉर चेकिंग द परफॉर्मेंस एंड द पोजीशन ऑफ द बिजनेस. और क्यों? because these are based on certain principles, and these principles are accounting period and you have your matching concept. तो period क्या हमें कहता है कि you must select a time period for you, for your business, and then matching concept tells you कि you must match your expenses with the revenue that you have generated, etc, etc. Okay, now great. उसके बाद third thing, now the fifth thing is that it includes means financial statements includes number first trading account, number second is profit and loss, number third is balance sheet, number fourth is your cash flow statement. Great. Now we have these four accounts, these four statements that we're gonna learn in this final accounts. So आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसकी? We'll learn this trading account, and in the next inshallah we'll be taking profit and loss, then balance sheet and cash flow not simultaneously, one after another. तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रेडिंग अकाउंट. नंबर फर्स्ट, डेफिनेशन. व्हाट डज दिस ट्रेडिंग अकाउंट इज ऑल अबाउट? ट्रेडिंग अकाउंट हम बोलते कैसे हैं? या जस्ट फोकस ऑन द टर्म ट्रेडिंग अकाउंट. So simply it says that an account which gives us the details about the trade. एक ऐसा अकाउंट, एक ऐसा टूल जो मुझे अपने ट्रेड के मुतालिक इन्फॉर्म करे, इंफॉर्मेशन दे, नॉलेज प्रोवाइड करे, ना मुझे बल्कि एवरी स्टेक होल्डर. वी कॉल दैट ट्रेडिंग अकाउंट. मीन्स an account that deals with the operations of the business. Suppose for example I'm the fruit seller, so my trade is what? Selling the fruit. तो यहाँ इस अकाउंट में जो डिटेल दी हुई होगी ना कि मैंने कितने फ्रूट्स परचेज किए, मेरे पास अभी कितने पड़े हुए हैं, मैंने कितनी सेल की, एंड व्हाट इज द प्रॉफिट दैट आई अर्न फ्रॉम दिस ट्रेड. वन मोर एग्जांपल, इफ आई एम द मिल्क सेलर, मैं दूध बेचने वाला हूं, तो इस अकाउंट में दूध के मुतालिक इंफॉर्मेशन होगी. आपके पास पहले कितना दूध पड़ा हुआ था, हाउ मच यू हैव परचेज्ड, और कितना परचेज किया आपने इस टाइम पीरियड में, एंड हाउ मच यू हैव सेल्ड आउट, कितना आपने बेचा और आपके पास कितना अभी पड़ा हुआ है दूध. सो दिस इज व्हाट वी लर्न इन दिस ट्रेडिंग अकाउंट. सो गिव यू द डेफिनेशन. इट इज एन अकाउंट which gives us details about the trade or operations of the business.
Great. So it is an account which gives us details about the trade. Means जो तिजारत हम करते हैं ना, so it will provide you information about that only. So we call it trading account. It is simply the first account that we gonna prepare. Now इसके essential characters, essential elements that you need to remember. Number first, it is prepared after trial balance. तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले जो चीज आपने याद रखनी है ना, इट इज प्रिपेयर आफ्टर ट्रायल बैलेंस. इसको हम कब बनाते हैं? इसको हम ट्रायल बैलेंस के बाद ही प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल दी थी पहले. आई टोल्ड यू दैट ट्रेडिंग अकाउंट ट्रायल बैलेंस इज द पूल. इसमें सभी एलिमेंट्स होते हैं, सभी कंटेंट, सभी इंफॉर्मेशन इसमें रहती है. दैट्स व्हाई इट्स सेड टू बी द मदर ऑफ द फाइनल अकाउंट्स, जिसमें हर एक चीज मौजूद हो. और इसी से हम ड्रैग करके वी प्रिपेयर आवर ट्रेडिंग अकाउंट. वी टेक दोज एलिमेंट्स, you know, whenever we teach to our students, we simply say them कि trial balance is actually it's the pool of players. इसमें सभी I'm just illustrating it with the example कि ये मान लीजिए कि एक ऐसा ग्राउंड है जहाँ पर आपके जितने भी वर्ल्ड की क्रिकेटिंग टीम्स हैं ना, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, पाकिस्तान हो, न्यूजीलैंड हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, इसमें सभी प्लेयर्स मौजूद होते हैं. एंड यू आर बीन आस्क्ड टू प्रिपेयर योर टीम. सो यू जस्ट टीम, अगर आपको मैं कहूँगा कि यार इस ग्राउंड में सभी प्लेयर्स मौजूद हैं, तो आप मुझे सिर्फ फॉर एग्जांपल आप मुझे इंडियन की टीम बना दीजिए, आप पाकिस्तान की टीम बना दीजिए, आप बांग्लादेश की टीम बना दीजिए. सो यू मेक दैट ओनली once you remember the name of those players who are playing for their countries. So similarly, the simple funda is we must remember the players of this trading account and profit and loss and balance, and then this is the simple trick. What we're gonna do, we're gonna drag and drop, drag and drop, drag and drop in their respective teams. So you'll do it within a few minutes if you masterize yourself in remembering the players. Great. The first thing is ये हम कब बनाते हैं? It's prepared after trial balance. तो ट्रेडिंग अकाउंट ट्रायल बैलेंस के बाद ही बनता है. नंबर सेकंड, it is prepared to estimate gross profit or loss. Great. So this is the basic fundamental objective of preparing this trading account. कोई भी आपसे कहेगा ना कि why trading account is prepared? So the simple reason is we prepare it to estimate gross profit or gross loss. तो इसे हम gross profit क्यों कहते हैं और gross loss that we'll learn inshallah within few minutes. तो याद रखना है हमने कि इसे हम क्या कहते हैं कि इट्स बीन प्रिपेयर्ड टू टेक ग्रॉस प्रॉफिट, टू एस्टिमेट योर ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस. ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को एस्टिमेट करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट की प्रिपरेशन होती है. नंबर थर्ड, इट ओनली टेक्स डायरेक्ट एक्सपेंसेस and direct incomes. तो जब भी आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे ना, तो इट ओनली टेक्स डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट इनकम्स. ये डायरेक्ट एक्सपेंस है क्या? दैट विल लर्न विद इन फ्यू मिनट्स. जस्ट बियर विद मी. सो यहाँ पर याद रखना है कि ट्रेडिंग अकाउंट में हम खाली डायरेक्ट एक्सपेंस लेते हैं और डायरेक्ट इनकम्स लेते हैं, यानी इनकम्स दैट यू जनरेट डायरेक्टली फ्रॉम द बिजनेस. And the fourth point that you must remember is that it is the first final accounts. Final accounts में जो सबसे पहली जो चीज बनाई जाती है, the first account that you prepare is the trading account. So maybe an MCQ will be asked to you कि which is the first account that is prepared in final account. So it is the trading account. Hope you got these characters and features of your trading account. And there is one more thing that you must keep in mind कि trading account
provides you the basis and foundations for the preparation of the rest of the accounts, for especially the profit and loss. Great. So this is few tidbits that you must keep in mind related to what? Related to trading account. So now let me show you the format, how it looks like. This is our trading account. So जब account की बात हम करते हैं, and we know for every account we have two sides. Yeah, there's one more thing that you must keep it in mind before learning this. I have forgotten this. मैं इस चीज़ को भूल गया अभी कि it's important to note it is nominal in nature. So this is the sixth point that you must pen down कि trading account का जो nature है ना, it is nominal, means on debit side you will write all expenses related to your business, and on credit side you will write on all incomes, revenues of the business. This is particulars and this is amount. So this is the first team that you're gonna prepare. ये पहली टीम आपने बना. Now what you gonna do is that you must keep the name of the players that comes into trading account. तो आपने याद होगा कि जब भी हम कोई मैच जब होता है ना, कोई भी मैच, so the first thing that comes into the ground is what? Is the opener who is going to start the innings. तो यहाँ भी बिल्कुल ऐसा है, and we know that this is an account and on this side everywhere where we write to we'll start with 2. तो पहली जो चीज़ यहाँ पर होती है that is to opening stock. Then we have to purchase and to direct expenses. By this side we have by sales, by closing stock. Okay, now let's take them one by one. Hey, सबसे पहले आपके पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ था once your period gets started? For example, my period starts from 1st Jan to 31st December. So the stock that was with me on the first day of this year, this is a calendar year. अच्छा, जो स्टॉक आपके पास रहेगा ना on the very first day, this is your opening stock. अच्छा, इस पीरियड में से फ्रॉम 1st Jan to 31st December आपने और कितना मटेरियल परचेज किया है, स्टॉक कितना परचेज किया, which you are dealing with. Then you have direct expenses. I'll tell you what these direct expenses are. यहाँ से क्या लिखना है? By sales. आपने कितनी चीज़ें, आपने कितने प्रोडक्ट्स, आपने कितनी सर्विस प्रोवाइड की, and how much stock is left with you on the last day of the accounting period. So if you are following this year, then it will be on the 31st December or on the 31st March, depends the year that you have taken. Great. अब देखो होगा क्या? So this is your income side. This one is the income side and this one is your expense side. Great. जब मैं यहाँ से total, now look how gross profit and gross loss is calculated and estimated. देखो मैं यहाँ से जब टोटल कर रहा हूँ इनकम साइड, इट कम्स एज 1 लाख रफली आई एम सेइंग. सो जब मैंने यहाँ इस साइड से टोटल किया ना, इट कम्स एज 1 लाख. जब मैंने यहाँ से टोटल किया, इट कम्स एज 80,000. सो दिस इज माई एक्सपेंस. हे नाउ लुक एट द बोर्ड बॉयज, आई हैव जनरेटेड रुपीज 1 लाख फ्रॉम द बिजनेस. अभी मैंने एग्जाम्पल दी थी, हम जस्ट अ फ्रूट सेलर. तो फ्रूट्स को बेच कर मुझे कितना मिला? 1 लाख. और मेरे टोटल एक्सपेंसेस कितने थे? इट वाज अराउंड 80,000. सो व्हाट आई हैव अर्न अ प्रॉफिट और लॉस. सो ऑब्वियसली व्हेन माय रेवेन्यू इज ग्रेटर देन द एक्सपेंस, सो आई हैव अर्न द प्रॉफिट. सो अब हम कैसे इसको लिखते हैं? तो यहाँ से कितना टोटल निकला? 1 लाख. सो राइट द हाईएस्ट
on both the sides, लेकिन यहाँ से तो है ही नहीं 1 lakh. So the difference will be the gross profit. Gross profit C rupees 20,000. क्योंकि इनकम थी कितनी 1 लाख, एक्सपेंसेस थे कितने 80,000, लेकिन टोटलिंग में हम रूल हमने पहले ही पढ़ा, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा जस्ट गो बैक टू माय लेजर अकाउंट्स वीडियो एंड यूल चेक दिस, कि जो भी साइड ग्रेटर होगी ना तो वो हम दोनों साइड्स में लिखेंगे, और जो डिफरेंस होती है ना, डिफरेंस इज ऑलवेज बीन रिटन ऑन द डेफिसिट साइड. सो यहाँ पर कितना था 1 लाख और यहाँ पर कितना था, इट वाज 80,000 एंड द डिफरेंस इज ग्रॉस प्रॉफिट. अगर ऐसा ना होता, ऐसा होता तो फिर कैसा होता. ग्रेट. अब वन मोर एग्जाम्पल, इसका अपोजिट अब हम लेते हैं. नाउ लुक, ऑन दिस साइड वाई वी हैव 1 लाख एंड ऑन दिस साइड से वी हैव 80,000. अब यहाँ से हमें एक्सपेंसेस 1 लाख दिखा रहा है और आपकी इनकम जो है ना वो है 80,000. से because of COVID I was not able to sell out my fruits, so they all got damaged, spoiled, etc etc. हुआ क्या, जब मैंने एक्सपेंस साइड टोटल किया सो इट कम्स एज 1 लाख, तो यहाँ से जब मैं टोटल करा इट कम्स एज 80,000. नाउ व्हाट द डिफरेंस इज, इट्स 20,000 एंड विल बी रिटन ऑन द डेफिसिट साइड. सो आई विल राइट हियर बाय ग्रॉस लॉस 20,000. अभी यहाँ से मैंने लिखा था ग्रॉस प्रॉफिट 20,000. ग्रेट. सो व्हेन सिंपली आपने क्या रूल याद रखना, व्हेन क्रेडिट साइड इज ग्रेटर वी हैव ग्रॉस प्रॉफिट. When debit side is greater, we have gross loss. Why? Because it is nominal. On this side, we have expenses. अब जब ये वाला side जब बड़ा होगा और ये छोटा होगा, so definitely we have gross loss. जब income side greater होगा as compared to the expenses side, so this simply indicates what? We have gross. So जब ये side बड़ा होगा, ये छोटा होगा, so we have gross profit. जब ये बड़ा होगा, ये वाला छोटा होगा, we have gross loss. Opposite. Now there are few essential elements that you must learn. ग्रेट. अभी मैंने कहा था आपके कि जब हमने फीचर्स पढ़े थे ना ट्रेडिंग अकाउंट, सो दिस अकाउंट इज अ टूल टू एस्टिमेट योर ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस. नाउ वी हैव फ्यू एसेंशियल इंपॉर्टेंट टर्म्स दैट यू मस्ट लर्न बिफोर मेकिंग इट्स फुल फॉर्मेट. नाउ द क्वेश्चन इज what is gross profit or loss? So this is a question. What's gross profit and why it's called a gross profit? Gross means raw profit, or raw loss means it is not a true profit. ये अभी पूरा प्रॉफिट नहीं है आपके पास. इट्स नॉट अ ट्रू प्रॉफिट, एग्जैक्ट प्रॉफिट और ऑथेंटिक प्रॉफिट ऑन विच यू रिलाई, बिकॉज you have to add certain more items into it and you have to deduct certain more items from it. That's why it's called a gross. आपने देखा होगा कि जब हम अपने किड्स को, अभी मैं स्कूल की एग्जांपल दे रहा था ना आपको, कि से वी हैव जस्ट एडमिटेड देम ऑन 1st Jan के दिन हमने उनको एडमिट किया, या दे आर जस्ट इन क्लास 10th. तो यहाँ से लेकर जब 31st December आएगा एंड आफ्टर 31st December you'll get their end results. यहाँ पर टर्म फर्स्ट हुई है, दिस इज T1 एंड दिस इज T2 एंड दिस इज T3. कोई किड है हमारा, सो 8th क्लास का. अब इन 3 एग्जाम्स में उसने he or she has got 290 out of 300. अभी जो ये रिजल्ट है ना, I'll call it gross result. Why? Because end term is still pending. End term. अभी फाइनल एग्जाम होने वाला है. जब फाइनल एग्जाम के रिजल्ट्स भी आएंगे, उसके मार्क्स भी एड अप होंगे या कोई डिडक्ट होंगे यहाँ से. सो यू हैव एन एंड टर्म ऑफ 200 मार्क्स. सो यू कांट से दैट माय किड, माय रिलेटिव हैज गॉट he or she has got the first position in this whole state. No, why? Because this is a gross result. Still you need to wait for the end results. अभी क्या ये जो है ये इंटरनल एग्जाम्स हैं, अभी 200 मार्क्स एक्सटर्नल एग्जाम भी है यार. जब उसका रिजल्ट आएगा फिर इसको कंपाइल करके, से फॉर एग्जांपल आउट ऑफ दीज 200, ये तो यहाँ से इसने कितने ले लिए थे, 2 से 90. सो फ्रॉम हियर शी हैज गॉट 100 आउट ऑफ 200. सो आउट ऑफ 500 दैट बडी हैज गॉट 390. So now this result has totally changed the picture of the result. Now this will call this net result. Till to this date, this will call it gross result. Similarly, it happens in the business.
जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं ना तो यहां से हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है. सो कोई कहेगा ग्रॉस प्रॉफिट होता है, इट्स द रॉ प्रॉफिट नॉट अ ट्रू प्रॉफिट. वी नीड टू वेट फॉर द नेक्स्ट टूल दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस, जहां से हमें एग्जैक्ट पोजीशन, हमें नॉट पोजीशन, एग्जैक्ट परफॉर्मेंस हमें निकलेगी, दिस नेट रिजल्ट. वो वहां से हमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस एसेटेन होगा. नाइदर यू कैन एड अप नॉर यू कैन डिडक्ट. दैट विल बी द नेट एंड द ट्रू पिक्चर ऑफ द बिजनेस. कहां से? From the profit and loss, but we must wait. तो यहाँ से हमें जो निकलता है ना result, that is gross, that is raw, means we have to go for a further process. And there is one more thing in trading account that you must learn, that is direct expense. Direct expenses. Direct expenses. These are those expenses which are incurred into a product or into a service till it gets ready for use. The summation of all those expenses which are incurred in manufacturing a product till it gets into its final stage means now the product is ready. The cost that you have incurred into it will be called as direct expenses. और बनाने के बाद भी बहुत सारे expenses incur रहते हो. Definitely, we call them indirect expenses, यानी those expenses which are not directly associated with the product. तो direct expenses की definition हम क्या लिखेंगे? We have two definitions mostly that we use in the schools, in the college and universities. The first one is all those expenses which have become the part and parcel of the product. Say for example, मैंने इस marker को manufacture किया. Now it contains plastic of ₹3. It contains ink of ₹2. It contains labor of ₹1. Other expenses ₹1. So total मिला के 3, 2, 5, 6 और 7. So these ₹7 I'll call them direct expenses because they have just become the part and parcel of this product. वो सभी एक्सपेंसेस जो एक प्रोडक्ट के पार्ट एंड पार्सल जुज बने तो उनको हम क्या कहते हैं? वी कॉल देम डायरेक्ट एक्सपेंसेस. और वी हैव वन मोर डेफिनेशन, दैट इज ऑल दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर इनकर्ड टिल अ प्रोडक्ट गेट्स फिनिश्ड. यानी वो सभी एक्सपेंसेस जो इनकर हो जाए तब तक टिल अ प्रोडक्ट इज रेडी फॉर यूज. Great. So we call them direct expenses and its examples are direct expenses के examples जो है ना, that is first direct expenses में हमें आता है, see we have labor wages. ये वो मजदूर हैं हमारे फैक्ट्री में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, those who convert raw material into finished goods, labor. Then I have commission on purchases. से मैं कहीं से रॉ मटेरियल परचेज कर रहा हूँ, but I don't know where from to purchase it. I have hired certain agents. तो उन्हीं के थ्रू मैंने मटेरियल परचेज किया, but I paid them. So we'll call this commission because अभी तक मैंने प्रोडक्ट बनाया नहीं. Then we have carriage inwards. For example, यहाँ पर है मेरा supplier. This is my company, and these are my customers. Customer 1, 2, 3. So now यहाँ से जो say I have taken the raw material, ये यहाँ पर this is in Jammu. अब I am in Kashmir, so I have to take raw material from Jammu to Kashmir for manufacturing. अब यहाँ पर तो I will incur certain transport charges. यहाँ मैंने गाड़ी से ले लिया, ट्रेन से ले लिया, either by any means. So we'll call that carriage inwards. तो ये भी होता है आपका direct expenses. Then you have factory heating, lighting, depreciation, oil, gas, etc. जितने भी expenses incur हो जाए factory में, where it's a place where goods are manufactured, so we call them direct expenses. Or you can have import duty, it's a form of tax that you learn. And you can have octroi as well. It's again a form of duty that you pay to your municipal corporation once you take your raw material from anywhere. So these are all your direct expenses. तो याद रखना है, direct expenses are those which are incurred
इन मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट, और यही वो एक्सपेंसेस हैं जो आप ट्रेडिंग अकाउंट में लेते हैं। और डायरेक्ट इनकम्स मीन्स दोज इनकम्स दैट यू हैव डायरेक्टली जनरेटेड फ्रॉम योर कोर ऑपरेशंस। फॉर एग्जांपल, इफ आई एम अ मिल्क मैन, आई एम मिल्क सेलर, जितना पैसा मिल्क को बेचकर मेरे पास आएगा ना, दैट विल बी माई डायरेक्ट एक्सपेंस, दैट विल बी माई रेवेन्यू। से आई एम ए टीचर, जो मैंने फी कलेक्ट किया है फ्रॉम द स्टूडेंट्स, दैट विल बी माई रेवेन्यू। Great. So this is the direct expense. Now let me just make the complete format of your trading account. Now this is our trading account. Okay, now this is the complete format of our trading account. Now look, the first thing that we'll write is opening stock. Then we'll write purchase less return, हम कहते हैं परचेज रिटर्न। से फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आई हैव परचेज गुड्स ऑफ ₹1,10,000, अगर मैंने गुड्स परचेज किए कितने, 1,10,000 के, बट फॉर एनी रीजन आई हैव रिटर्न बैक गुड्स ऑफ ₹10,000, 10,000 के गुड्स मैंने रिटर्न किए हैं बाय एनी रीजन, बिकॉज ऑफ ब्रेकेज, बिकॉज ऑफ wrong taste, wrong color, wrong combination, or by any reason. So my net purchase will be ₹1 lakh, जो आप यहाँ पर लिखेंगे। देन हम लिखेंगे अब डायरेक्ट एक्सपेंस, तो उसमें क्या आएगा सबसे पहले, टू wages, to carriage inwards, to factory heating, to factory lighting. Then we have to factory oil, gas, water. Then we have to factory depreciation, to import duty, to OCTRI, factory. So these are all your direct expenses that are incurred in manufacturing a product. So सबसे पहले the first player that comes into the trading account is your opening stock, means the material that is with you on the very first day of your period. Then purchases, how much material you have purchased, कितना आपने इतना और goods purchase किए. Then you will less return. यहाँ पर एक important चीज़ आपने याद रखनी है कि इसे या तो हम कहते हैं purchase return or return outwards. अभी मैंने जो नीचे एग्जांपल दी थी, फॉर एग्जांपल दिस इज माय सप्लायर, हियर इज माय कंपनी, एंड नाउ दीज आर माय कस्टमर्स। जब मैंने सप्लायर से मटेरियल परचेज किया था, देन बाय एनी रीजन आई हैव रिटर्न गुड्स बैक. So this is what we write here in purchase return. Then wages to carriage inwards, to factory wages, heating, lighting, oil and gas, depreciation, import duty, octroi. Great. On this side we'll write number first, by sales. Again we'll write here, will less return, यानी जिसे हम कहते हैं sales return, and net sales will take it here. यहाँ भी या तो हम इसे कहते हैं SALES, sales return, और return inwards. अब देखो हुआ क्या. Now we have sold goods to these customers, and by any reason, one of, or maybe two, or maybe more than two,
3, 4, 5 customers have returned goods back to the company, to the business, so we call it sales return. और लास्ट जो यहाँ पर आइटम आएगा ना, दिस इज बाय क्लोजिंग स्टॉक। जब पीरियड कंप्लीट हुआ आपके पास कितना माल पड़ा हुआ है अभी। सो दीज आर द प्लेयर्स दैट यू मस्ट कीप इन माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग योर ट्रेडिंग अकाउंट। अब देखो करना क्या है एट द एंड। We'll do a rough total on the credit side because we know these are our incomes and these are our expenses. यहाँ भी टोटल कर लेंगे और यहाँ भी हम टोटल कर लेंगे। जिस साइड से ज़्यादा हमें निकलेगा ना, सो विल राइट दैट ऑन द बोथ साइड। जैसे मैंने रिसेंटली आपको एग्जांपल दी थी रुपीज़ 1 लाख। सो इफ दिस साइड, क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन द डेबिट साइड, देन विल गेट टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। अगर ये वाला साइड जो है ना ये बड़ा आ रहा है, if expenses are coming greater as compared to your incomes, then you'll write here by gross loss. Great. So if this side is greater, then you have gross loss, and if this side is greater, then you have ग्रॉस प्रॉफिट। तो डिफरेंस जो है ना वो लिखनी है। अगर यहाँ की डिफरेंस होगी तो ग्रॉस प्रॉफिट विल बी द क्रेडिट बैलेंस एंड ग्रॉस लॉस विल बी द डेबिट बैलेंस, क्योंकि हमने अकाउंट्स में पहले ही पढ़ा कि डेबिट बैलेंस विल ऑलवेज बी रिटन ऑन द क्रेडिट साइड एंड क्रेडिट बैलेंस विल ऑलवेज बी रिटन ऑन द डेबिट साइड। Okay, now we have learned the trading account and its element and its contents, etc., etc. Now the last thing that you must learn as a student of commerce, as the students of accounts, because accounting is said to be the backbone of business. Great. So the last thing that we're gonna learn is some formulas. कुछ important formula जो है यहाँ पर important हमें याद रखनी है। The first formula that we're gonna learn is COGS, COGS. It's an acronym that stands for cost of goods sold. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी जो चीजें आपने बेच डाली इन द मार्केट, आपको खुद कितना कॉस्ट उन पर इनकर हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम अ बैट सेलर, मैं कश्मीर में बैट्स बना, आई जस्ट एक्सपोर्ट देम। जब मैंने बैट को एक्सपोर्ट किया, सो पर बेट आई एम गेटिंग अ सेल ऑफ ₹1000। मेरी जो बेच का प्राइस है ना, आई एम सेलिंग इट एट अ प्राइस ऑफ ₹1000। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा ना कि दीज बैट्स कम ऑल ऑफ अ सडन टू मी। डेफिनेटली आई हैव टू परचेज द वुड फर्स्ट, देन आई विल इनकर सर्टेन लेबर कॉस्ट, सर्टेन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो एक बेट को बनाने में सपोज फॉर एग्जाम्पल मुझे खुद इसमें लगी ₹600। सो दिस इज द कॉस्ट एंड दिस इज द रेवेन्यू दैट आई हैव जनरेटेड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दिस इज माई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। से मैंने सेल कितने की हुई, 1000 की सेल की मैंने, लेकिन मैंने खुद कितना इनकर किया था, 600। सो दिस माई कॉस्ट। सपोज फॉर एग्जाम्पल नाउ आई हैव एक्सपोर्टेड अ बेट्स फॉर ₹1 लाख। मान लीजिए कि 1 लाख के बैट्स मैंने जो है इसको सेल आउट किया, लेकिन खुद जो ये बैट्स मैंने सेल आउट किए किस पे कितना लगा था हमें, ₹60,000. This 60,000 will be called as cost of goods sold. Means जो goods आपने बेच डाले आपको खुद कितना इनकर हुआ था कॉस्ट इन पर, we call that COGS simply. And इसकी जो formula है ना, that's very easy. We get it from this trial balance actually from the format as well. So COGS is equivalent opening stock. Hey, this one opening stock, यही तो कॉस्ट है मेरा, प्लस परचेजेस, मैंने कितनी परचेज की हुई है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, मेरे पास कितना माल पड़ा हुआ है अभी। दिस इज द कॉस्ट दैट यू हैव इनकर्ड।
फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास था से ओपनिंग स्टॉक ऑफ ₹10,000 and you have purchased goods more of ₹1 lakh, 10,000 का माल पड़ा हुआ था, 1 लाख का मैंने और परचेज किया. से ऑल ऑफ दीज डायरेक्ट एक्सपेंसेस कम एज 20,000. जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस ये 20,000 मिले हमें, इनका टोटल हमें कितना मिल रहा है 20,000. और मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है 30,000. तो अगर मैंने यहाँ से कॉग्स एस्टिमेट करना हो तो राइट डाउन 10,000 is my opening stock, plus I have purchases of ₹1 lakh, plus I have direct expenses of ₹20,000, minus I have 30,000 as my closing stock. So I'll get my COGS here as ₹1 lakh, because 1 lakh plus 20,000 is 1,20,000 plus 10,000 is 130 minus 30. The closing stock that I am holding with comes as what? 1 lakh rupees is my COGS. So जो goods मैंने sell out किए कितने say rupees of 10, 20, say 2 lakhs. इस पर मेरा खुद का COGS कितना cost आ रहा है? Say it's ₹1 lakh. So you just remember this formula कि COGS is always equivalent opening stock plus purchase plus direct expenses minus closing stock. Great. So we have two more formulas that we'll get here. तो जब हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया तो वी गेट एंड रिजल्ट्स आइदर एट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस. तो अगर मैं सिंपल ट्रिक शॉर्टकट फॉर्मूला में लिखूं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ GROSS ग्रॉस PROFIT ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वलेंट सेल्स, जो मैंने यहाँ पर सेल्स की हुई है, माइनस कॉग्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. Cost of goods sold, gross profit. For example, I have just a sales of ₹2 lakhs, 2 लाख की सेल हो चुकी है और COGS 1 लाख आ रहा है. How much is the gross profit? It is ₹1 lakhs. तो 1 लाख तो मैंने कमाया, लेकिन this is gross. Still, I have to add up few more items. I have to deduct it. Or from this formula, you'll get two more formulas. देखो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉग्स. अगर आपने सेल्स खाली निकालनी हो तो व्हाट यूल डू, यूल जस्ट टर्न इट ऑन द लेफ्ट साइड. सो विल से ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ तो ये नेगेटिव है कॉग्स, इट विल बिकम हियर प्लस पॉजिटिव, प्लस कॉग्स इज इक्वल टू सेल्स अगर सेल्स निकालनी हो तो. अगर आपने अब कॉग्स निकालना हो तो व्हाट you'll do that this is your formula first, this is our formula second, and the formula third is gross profit को हम यहाँ से लेते हैं, कॉग्स को यहाँ से लेते हैं. So we'll say that COGS is equivalent sales, gross profit को यहाँ से लेंगे minus GROSS gross profit. So these are the three formulas that you must keep it in mind. Gross profit is equal to sales minus COGS. Gross profit plus COGS is equal to sales. We get this. These are two derived formulas that we get from the main formula. Hope you got this. So I believe that now your doubts about trading accounts are all cleared. So please do like, please do comment, please do share and support your brother as much as you could. Thanks a lot.